Hello guys, good morning and welcome to another episode of Gyan Nexus Daily Quiz. Today's topics are very interesting and very informative for you. And first of all, let me tell you what we are going to discuss today. First of all, we are going to discuss about Financial Action Task Force, then Turquoise Nexus, then number three, Vitorkonica Wildlife Sanctuary. Number 4, Peria River. Number 5th, sickle cell anemia. And number 6 is about a Gyan app. So let's move to today's discussion. Before explaining today's question, let me share with you that the discussion of today's questions will be available both Hindi and English format in our blogspot account, that is gyannexus.blogspot.com. आपको gyannexus.blogspot.com का जो blogspot अकाउंट है वहाँ पे सभी क्वेश्चंस का हिंदी और इंग्लिश ट्रांसलेशन मिल जाएगा. आप वहाँ पे जाके दोनों का हिंदी और इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़ सकते हैं. सो लेट्स मूव टू today's discussion. So the first question of today's discussion is about FATF. Recently, India has been elected to the Vice Presidency of the Financial Action Task Force for the first time. The headquarters of FATF is located in which of the following cities? So question ये है कि FATF का हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन नंबर ए न्यूयॉर्क, ऑप्शन न्यूयॉर्क, ऑप्शन नंबर बी वाशिंगटन, ऑप्शन नंबर सी पेरिस, ऑप्शन नंबर डी लंदन. सो यू पॉज द वीडियो एंड गेस द करेक्ट आंसर. अब वीडियो को पॉज कीजिए और करेक्ट आंसर को गेस कीजिए. सो द करेक्ट आंसर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ FATF आर लोकेटेड इन पेरिस, France. It was established in 1989 at the G7 summit in Paris. Financial Action Task Force is an independent intergovernmental body that develops policies to combat money laundering and terrorist financing. So money laundering और terrorist financing को रोकने के लिए और इसे ख़त्म करने के लिए FATF का गठन किया गया था और इसका हेडक्वार्टर जो है वो पेरिस में स्थित है. Now let's move to the question number 2. Which Indian personality was recently appointed as the Vice President of FATF? So भारत का वो कौन सा व्यक्ति है जिसको हाल ही में FATF का वाइस प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया है? ऑप्शन नंबर ए विवेक अग्रवाल, ऑप्शन नंबर बी जय शाह, ऑप्शन नंबर सी विक्रम मिश्री, ऑप्शन नंबर डी गोविंद मोहन. So the correct answer is recently Vivek Agarwal has been appointed as the Vice President of FATF. India will hold FATF Vice Presidency for the first time. FATF publishes reports on money laundering techniques, terrorist financing methods, proliferation financing risks. It sets global standard for anti-money laundering, counter-terrorist financing. So हाल ही में विवेक अग्रवाल को FATF का वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है और भारत पहली बार FATF का वाइस प्रेसिडेंसी इस बार होल्ड कर रहा है. सो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर थर्ड, दैट इज रिसेंटली Turquoise Nexus initiative was in the news. The initiative is related with which of the following field? Turquoise Nexus का जो इनिशिएटिव है वो किस फील्ड से रिलेटेड है? ऑप्शन नंबर ए टेरर फाइनेंसिंग, ऑप्शन नंबर बी मनी लॉन्ड्रिंग, ऑप्शन नंबर सी climate resilient agriculture and water systems, and option number D none of the above. So the correct answer is Turquoise Nexus initiative is related with climate resilient agriculture and water systems. Turkey's presidency of 2026 United Nations Framework Convention on Climate Change, COP20 Conference of Party 31 and Food and Agriculture Organization have introduced the Turquoise Nexus initiative. Turquoise Nexus initiative aims to integrate food security, water management and climate adaptation into national climate plans. So Turquoise Nexus का जो initiative है वो
फूड सिक्योरिटी, वाटर मैनेजमेंट और क्लाइमेट अडॉप्शन के बारे में नेशनल क्लाइमेट प्लान्स में इसका क्लाइमेट प्लान में ये सब चीज़ों का प्रायोरिटी देने के लिए टर्कोइज नेक्सस प्लान को इनिशिएट किया गया है. Now let's move to the question number 4. That is about Bhitarkanika Wildlife Sanctuary is located in which of the following Indian state? So Bhitarkanika Wildlife Sanctuary भारत के कौन से राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए वेस्ट बंगाल, ऑप्शन नंबर बी असम, ऑप्शन नंबर सी उड़ीसा, ऑप्शन नंबर डी झारखंड. The correct answer is Bhitarkanika Wildlife Sanctuary is located in Odisha. Renowned for its vast mangrove ecosystems and tidal rivers, it was declared a sanctuary in 1975 to protect the endangered estuarine or saltwater crocodile. Recently, a study revealed that microscopic plastic pollution is infiltrating the pristine habitats of India's Bhitarkanika Wildlife Sanctuary, carrying a toxic cargo of heavy metals into the Brahmani River. So भितरकनिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को 1975 में इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर किया गया था. और हाल ही में ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि एक स्टडी के दौरान ये पता चला है कि इसके हैबिटेट के अंदर जो प्लास्टिक का पोल्यूशन है वहाँ तक घुस गया है. सो इसलिए ये न्यूज़ में था. और प्लास्टिक जो है उसको उसके इकोसिस्टम में ऐसे फैल गया है कि विच इज़ वेरी हार्मफुल फॉर द लिविंग organism. So let's move to the question number 5. That is about the Periyar River. Periyar River, one of the major river of southern India. It is the longest river of which of the following South Indian state? Periyar River भारत के दक्षिण के कौन से राज्य का सबसे लंबी नदी है? ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर बी केरला, ऑप्शन नंबर सी कर्नाटका, ऑप्शन नंबर डी आंध्र प्रदेश. So correct answer is Kerala. Periyar River is the longest river in Kerala. It is known as the lifeline of Kerala due to its importance in irrigation and power generation. It originates from the Sivagiri hills of the Western Ghats near the Tamil Nadu border. It flows through Periyar National Park and enters Periyar Lake, that is the artificial reservoir. It later flows into the Vembanar Lake and finally drains into the Arabian Sea near Kochi. The Kerala High Court recently stressed the need for a unified authority to monitor the cleanliness of the Periyar River. जैसा कि आप सबको पता है कि भारत के सभी नदियों का हाल अभी बहुत ही अच्छा नहीं है. सो उनमें से पेरियार रिवर भी पोल्यूशन और गंदगी का शिकार हो रहा है. इसीलिए केरला हाई कोर्ट ने इसके लिए एक अथॉरिटी को मॉनिटर करने के लिए दिया है जो कि इसकी क्लीनलीनेस का ध्यान रखेंगे. Now let's move to the question number 6. Recently, sickle cell anemia was in the news. Sickle cell anemia एक बीमारी है. वो किस टाइप का बीमारी है? नंबर 1 ए ऑप्शन नंबर ए इन्फेक्शियस डिजीज, ऑप्शन नंबर बी जेनेटिक डिजीज, ऑप्शन नंबर सी वायरल डिजीज एंड ऑप्शन नंबर डी बैक्टीरियल डिजीज. So the correct answer is sickle cell anemia is a genetic disease. It is a group of inherited blood disorders affecting hemoglobin. Hemoglobin is the oxygen carrying molecule in red blood cells that supplies oxygen throughout the body. Normally, red blood cells are disc shaped and flexible. They move easily through blood vessels In sickle cell anemia, abnormal hemoglobin called hemoglobin S is produced. This causes red blood cells to become rigid and sickle, that is in crescent shape, जो छान के आकार का होता है. Sickled red blood cells cannot move smoothly through vessels and it block blood flow, stick to blood vessel walls, reduce oxygen delivery to tissues. That this leads to painful and dangerous complications. Recently, sickle cell anemia was in the news because President Murmu announced that India will
eradicate sickle cell anemia by 2047. सो सिकल सेल एनीमिया एक जेनेटिक डिसऑर्डर है और इसका जो रिलेशन है वो हीमोग्लोबिन के साथ है और एक जब एक आदमी सिकल सेल का शिकार होते हैं उसका जो रेड ब्लड सेल होता है वो क्रिसेंट शेप का बन जाता है और जो आसानी से पास नहीं हो पाता है और जिसके कारण से ऑक्सीजन बॉडी के हर पार्ट्स में नहीं पहुंच पाता है और this creates a very dangerous complications. Then let's move to the question number 7, that is the last question of today's discussion. That is, recently a Gyan app was in the news. It is developed by which of the following agency? हाल ही में अभिज्ञान ऐप खबरों में था और ये किस एजेंसी के द्वारा बनाया गया है? Option number A, ISRO, that is Indian Space Research Organization. Option number B, DRDO, that is Defense Research and Development Organization. Option number C, NCRB, that is National Crime Records Bureau. And option number D, SEBI, that is Securities and Exchange Board of India. The correct answer is Abhigyan app is developed by the National Crime Records Bureau. It is a centralized digital platform developed to support law enforcement agencies. It helps in the efficient use of crime-related data for investigating and policing. It allows police personnel in the field to access criminal records directly on smartphones. It has some advanced capabilities like real-time fingerprint identification within seconds, fast criminal identification system, access to millions of criminal records. सो अभिज्ञान ऐप के द्वारा जिसको एनसीआरबी के द्वारा डेवलप किया गया है और इसके द्वारा लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी और पुलिस का काम काफ़ी आसान हो जाएगा और डायरेक्टली उनके स्मार्टफोन से ही एक आदमी का पूरा क्रिमिनल रिकॉर्ड और मिलियंस ऑफ केस के अंदर से उसको स्कैन किया जाएगा और इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर पुलिस. सो this is the end of today's discussion. As I told you that you can access to the Hindi and English translation of this lecture and simply go to the gyannexus.blogspot.com and you can also follow our Facebook page, that is the Gyan Nexus, and you can also subscribe to our YouTube channel that is in the name of Gyan Nexus. So thank you very much.